Assalamu alaikum, ladies. So I hope everyone is fine. And after the discussion of handout number 3, we understood the different types of syllabi, different types of curriculum. And now we have to move on to handout number 4, which is needs and goals. So सारे curriculum types और सारी different जो हैं curriculum models को देख के आप सब आपने ये देखा कि the first step is to identify the needs and goals, the of what the learners need and what the teachers have set out the goals कि जिसकी बेस पे हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं और उन ऑब्जेक्टिव्स की बेसिस पे हर तरह की लर्निंग एक्टिविटीज टीचिंग एक्टिविटीज जो है वो डिजाइन की जाती हैं सो उन्हीं नीड्स एंड गोल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए कि उसके कॉग्निटिव जो एस्पेक्ट्स क्या हैं उसके इफेक्टिव एस्पेक्ट्स क्या हैं तो अब हम थोड़ा सा इस हैंडआउट को देखते हैं. So goals come in many shapes and forms. They can refer to cognitive and affective aspects of the learner's development, what the teacher hopes to achieve in the classroom, what the teacher hopes the learners will achieve in the classroom, the real world communicative tasks. This is important. The learners should be able to perform as a result of instruction and so on. Real world communicative tasks के language की जो लर्निंग का मकसद है वो खाली ये नहीं है कि यू पास अ टेस्ट और यू पास अ ग्रेड बट द रियल पर्पस इज दैट यू कैन कम्युनिकेट इन द रियल वर्ल्ड. कम्युनिकेटिव टास्क क्या होते हैं कि व्हेन यू वांट टू डू समथिंग यू कैन यूज द लैंग्वेज इफेक्टिवली टू कम्युनिकेट एंड परफॉर्म दैट टास्क. ठीक है. The project oriented goals can be derived directly from the learners themselves. That is, by asking the learners why they are learning the language. So why they are learning the language is important, but usually in schools आप ये देखते हैं कि you do not base your syllabus or your curriculum based on the on asking the learners and trying to know their needs. ठीक है, ऐसा ही होता है ना. What you do is syllabus designers, they derive them through a process of introspecting on the sorts of communicative purposes for which language is used. These can either relate to a restrictive domain, यानी कि English for specific purposes अगर हो, जैसे for instance if you want to go for a job and you know exactly कि इस जॉब के रिक्वायरमेंट्स के लिए कितनी आपको इंग्लिश की ज़रूरत है उतनी इंग्लिश सिखा दी जाए, दैट इज़ रिस्ट्रिक्टेड डोमेन. या फिर मोर जनरल पर्पसेस के ओवरऑल एक लैंग्वेज की डेवलपमेंट हो जाए और जनरली एक लैंग्वेज की कॉम्पिटेंस बढ़ जाए. तो इस तरह से डिटर्मिन किए जाते हैं गोल्स. In considering needs and goals, we should keep in mind that teacher syllabus and the learner syllabus or agenda might differ. This often happens that the teachers aim or make objectives keeping one perspective in mind, but the learners have a different kind of perspective in mind. या different तरह की उनकी expectation होती है from the syllabus या from the agenda of learning and teaching. तो वो एक there is a certain kind of a clash because they are not on the same page. या maybe there is no clash, लेकिन फिर भी at the end outcomes are not the same because teacher एक perspective से पढ़ा रहे होते हैं, learners एक दूसरे perspective से learn कर रहे होते हैं. So it is better that beforehand, before beginning instruction, learners की needs, उनके goals, उनके aims, personal aims को identify कर लिया जाए. उनको syllabus के aims, objectives के बारे में बता दिया जाए. That they have a certain expectation, okay, we are going to learn this, 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 and they adjust their own personal goals, your personal aims according to what the syllabus is designed for. Okay? So one of the purposes of subjective needs analysis is to provide learners and teachers in exchanging information so that the agendas of the teacher and learner may be more closely aligned. Okay? So they know each other's agendas and they may be aligned. This can happen in two ways. In the first place, the information provided by learners can be used to guide the selection of content and learning activities. Yani, this is a very grassroots level कि पहले learners से information ले ली जाए और उसके बाद उसकी बेस पे आप selection of content करें या learning activities करें कि भी मेरे learners की ये needs हैं और ये content और ये activities जो है directly उनकी needs को cater करेंगी.
Secondly, by providing learners with detailed information about goals, objectives and learning activities. कि भाई हमारे सिलेबस, ये दूसरा तरीका कि जी सिलेबस ऑलरेडी बन चुका है, कंटेंट सेलेक्ट हो चुका है, तो उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन about the goals, objectives or learning activities दे दी जाए ताकि learners may come to have a greater appreciation and acceptance of the learning experience they are undertaking or about to undertake. So what happens is when learners understand okay कि इतना comprehensive जो हमारे लिए डिजाइन किया गया है, the purpose behind all of this is this, so they appreciate the content which they are going to learn more and वो एक personal adjustment साथ साथ करते जाते हैं. In that way their motivation level is high and they learn more. ठीक है? Some of the purposes which learners and teachers and syllabus planners may identify are as follows. अब जरा इसको देखिए, these are just sample. To develop skills in learning how to learn. Learning how to learn, metacognition आ गई कि you understand how you learn or what is the best way to learn this content. इस तरह की skills आ जाएं कि you know कि language जो मैंने acquire करनी है, what is the best way through which I can acquire this language. To develop the skills necessary to take part in academic study. So because generally हम general English के courses यहाँ पर करते हैं, या जिस तरह आप इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग भी कर रहे हैं, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो आप कर रहे हैं, दिस इज फॉर द पर्पस कि आप स्कूल्स में जाके जनरल इंग्लिश के कोर्सेज पढ़ाएं. तो एकेडमिक स्टडी मे बी एट स्कूल लेवल और एट द हायर लेवल, दोनों तरह से आपके पास यू हैव द स्किल्स टू कैरी देम आउट, टू डेवलप एन अप्रिसिएशन ऑफ द टारगेट सोसाइटी एंड कल्चर. टारगेट सोसाइटी एंड कल्चर किसका? Of the English speaking people. So this is a basic assumption that when you learn a language, you not only learn the language, you learn the culture, the thought processes and the societal norms along with it. तो ये कितनी करनी है, कितनी नहीं, appreciate करें, अपने से contrast करें, कितनी adopt करनी है, कितनी adapt करनी है, तो ये सब learners को पता होना चाहिए. To develop sufficient oral and written skills to obtain a promotion from skilled worker to site supervisor. अब ये यानी एक खास context में उन्होंने एक ये गोल बनाया होगा कि जी इस तरह से आपकी oral written communication हो जाए कि आप skilled worker से site supervisor, यानी आपकी promotion भी इस पे base करती हो. तो this is, you know, ऊपर वाले थोड़े general थे, नीचे ये जो fourth है, this is a specific goal. To communicate socially with members of the target or host community, to develop the survival skills necessary to function in the host community. ठीक है? Communicate socially एक purpose है, और फिर survivor skills that like अगर for instance you go to a country and you don't speak a word in that language and you have to go and find a washroom for instance, so you don't have the necessary survival skills कि आप वहाँ पे रेस्टोरेंट पूछ लें, हाँ आप देख सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं, बट अगर आपको एक लफ्ज भी नहीं उसमें आता या आप बिल्कुल उसमें कॉम्पिटेंस आपकी नहीं है, तो देन यू कैन नॉट सर्वाइव इन द होस्ट कम्युनिटी. सो इंग्लिश लैंग्वेज अगर बात करें तो यू हैव द नेसेसरी सर्वाइवल स्किल्स प्लस द सोशल स्किल्स कि जिसमें आप होस्ट कम्युनिटी में जाके फंक्शन कर सकें. To establish and maintain social relationships. Relationship means that if you go and live somewhere for a certain amount of time, you form friendships. You have to deal with certain amount of people on a daily basis. So you carry on that relationship, that social relationship in that context. So you have the necessary skills. And then to be able to read and appreciate the literature of the target culture, to comprehend items of news and information on current affairs from the electronic media. अब ये उन्होंने खाली एक सैंपल दिया हुआ है, ठीक है, कि पर्पसेस इस तरह से डिफाइन किए जाते हैं. अब इसमें से आप खुद भी देख सकते हैं कि जैसे अगर हम पाकिस्तान में अभी हम इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की बात करें तो इसमें से हम कौन कौन से सिलेक्ट करेंगे. ज़रा यहाँ पे आप इसको वीडियो को पॉज करें और आपकी जो पेयर मेंबर है, पहले हमने जो हैंडआउट 3 के हिसाब से डिस्कशन की है उसमें आप 5 मिनट उनसे बात करके तो ज़रा खुद डिसाइड करें कि इनमें से कौन से पर्पसेस या गोल्स जो हैं वो पर्सनली आपके लिए रेलेवेंट हैं या आपके कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट हैं या नहीं. So take a pause of 5 minutes, pause the video here and come after you have discussed with your pair member. Okay, so
now that you have had the discussion with your peer member, so जो भी आपके साथ जो भी आप इसमें से गोल्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसकी बेस पे ही नीचे वाले क्वेश्चंस का जरा आंसर दीजिए. To what extent do you think it possible for information such as this to be used to modify a syllabus which has been set by an outside authority? अब ये जो सारे अगर goals and purposes हो, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास हो कि भी हमारे लर्नर्स के या हमारे इस तरह के गोल्स ये हैं, तो हम अपने एक सिलेक्टेड सिलेबस में कितनी तरह की चेंजेस कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस हम सोशल कम्युनिकेट सोशली, ये जो नंबर 5 है, इसकी बात करें तो हम इसके हिसाब से कितना कंटेंट है वो हम चेक कर सकते हैं. डेवलप द नेसेसरी सर्वाइवल स्किल्स जो हैं, ये हम देख सकते हैं कि कितना कंटेंट है कितना नहीं है, हम ये मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं. एकेडमिक स्टडी की जितनी चीज़ें हैं वो कितना हमारे पास कंटेंट उस तरह का है किस तरह का नहीं है. ठीक है, फिर ये जो लिटरेचर, रीड एंड अप्रिशिएट द लिटरेचर, वो कितना कवर हो रहा है कितना नहीं. तो बेस्ड ऑन दीज काइंड्स ऑफ गोल्स इट इज़ पॉसिबल कि हम काफ़ी ज़्यादा उस सिलेबस में मॉडिफिकेशंस कर सकें, या कम से कम अपने कमेंट्स डाल सकें, या पढ़ाते हुए इन चीज़ों को जहन में रख के इन क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकें. So would it be possible to develop a common syllabus to meet all the communicative needs incorporated in the above statements? So all the communicative needs, can they be met with the common syllabus or not? A common syllabus जो है, it can go up from the school level to the tertiary level. अब क्या इस तरह के goals जो हैं, are they conducive या are they appropriate for all levels? एक कॉमन सिलेबस बन सकता है. तो जैसे लर्निंग हाउ टू लर्न क्लास 5 के लिए डिफरेंट तरह की एक मेटाकॉग्निशन होगी, क्लास 10th के लिए डिफरेंट होगी, हायर एजुकेशन में डिफरेंट होगी. फिर सर्वाइवल स्किल्स, व्हाट काइंड ऑफ सर्वाइवल स्किल्स की एक्सपेक्टेशन बच्चे चिल्ड्रन के साथ कुछ और होगी इन द होस्ट कम्युनिटी. उनके साथ थोड़े से लोग ज़्यादा टॉलरेंट होंगे, उनको ज़्यादा चांसेस देंगे, अडल्ट्स के साथ नहीं देंगे. तो किस किस्म की उनके पास सर्वाइवल स्किल्स होनी चाहिए, किस किस्म की उनको सोशल रिलेशनशिप की ज़रूरत होनी चाहिए. ठीक है, सो ऑल ऑफ दिस हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड. और फिर बेस्ड ऑन दैट वन सिलेबस डिज़ाइनर हैज़ टू आस्क द क्वेश्चन कि क्या एक ही सिलेबस जो है कॉमन सिलेबस, कैन इट मीट all the communicative needs or not? If not, what are some of the syllabus elements which might be similar? ठीक है, which might be similar. कौन से syllabus elements हैं which might be similar and which might be different? ठीक है, तो different levels पे, for instance अगर हम 3 levels ले लें कि हम primary level, secondary level और फिर tertiary level, तो आप यानी ग्रेड्स ले लें कि ग्रेड 5, ग्रेड 10 एंड देन आप हायर एजुकेशन BS लेवल पे आप एक चीज़ ले लें कि अगर हमें उनके लिए सिलेबस जो है डिज़ाइन करना हो तो उसके कौन से एलिमेंट्स सेम रह सकते हैं और कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमें ग्रेड वाइज चेंज करने होंगे. सो अगेन टेक 5 मिनट्स, डिस्कस विद योर पेयर मेंबर, मेक अ लिस्ट. ये मुझे रिटन एंड पे चाहिए. जो आपने पहले जो है डिस्कशन की उसके पॉइंट्स आप लिखेंगी अपनी पार्टनर के साथ, तो वो आपने वहाँ पे शेयर कर देने हैं मेरे साथ. और फिर ये वाला जो पॉइंट्स हैं, जस्ट पॉज द वीडियो हियर और टेक 5 मिनट्स, और उसके बाद जो है आप ये जो पॉइंट्स हैं कि व्हाट आर सम ऑफ द सिलेबस एलिमेंट्स व्हिच माइट बी सिमिलर, व्हिच माइट बी डिफरेंट ऑन द 3 ग्रेड लेवल्स जो हमने कहा है कि ग्रेड 5, ग्रेड 10 एंड देन BS लेवल. ठीक है, सो पॉज द वीडियो हियर और अपनी आपकी इसके बारे में क्या राय है जस्ट राइट देम डाउन, और ये फिर बाद में आप मुझे ईमेल कर सकती हैं. तो जस्ट पॉज द वीडियो हियर. Okay, so now you took 5 minutes to discuss which syllabus elements might be similar or different. Then the next question directly caters to and connects to it, that which of the elements could be accommodated by a single syllabus. अब इसके points 5 minutes यहाँ पे pause करें, discuss करें कि कौन सी statements जो हैं they can be accommodated by a single syllabus अगर करनी पड़े, कि जो हर level के लिए appropriate हो. So just take another pause and then write down your thoughts with your partner after discussion, and then you can resume. Okay,
So for those goals aimed at learners who are at roughly the same proficiency level, it might be possible to identify certain common elements, particular terms of grammar and common core vocabulary items, कि जो उनको अगर पढ़ा दी जाए या उनको इनकी इंफॉर्मेशन दे दी जाए, नॉलेज दे दी जाए, तो उनके ये गोल्स और नीड्स पूरे हो जाते हैं. ठीक है, तो इसमें टॉपिक्स, थीम, सिचुएशन एंड सो ऑन भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, जिसको एक्सपीरियंशियल कंटेंट कहा जाता है. एक्सपीरियंशियल कंटेंट क्योंकि एक्सपीरियंस में इस तरह के टॉपिक्स आएंगे, थीम्स आएंगे, सिचुएशंस आएंगी और उनको कवर कर दिया जाए. ठीक है, दैट ओके. सो अब यहाँ पे उन्होंने किया है, द मैक्रो स्किल फोकस might also vary, with some students wishing to focus on the development of literacy skills and other wishing to concentrate on the development of listening and speaking skills. Literacy skills का मतलब क्या है कि reading and writing बाज को पसंद होगी कि वो उनकी develop हो, और बाज students जो हैं वो कहेंगे कि नहीं हमारी listening speaking जो है. तो यहाँ पे यानी common elements अगर हम similar define कर भी लें, grammar में भी, common core vocabulary items में भी, topics and theme, तो उसमें जो लैंग्वेज की मैक्रो स्किल्स जो 4 स्किल्स में से है, उसमें भी डिफरेंसेस आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल लर्नर डिफरेंसेस. सो इफ लर्नर्स वर at a similar proficiency level, the following purposes could probably be covered by a single syllabus. ठीक है, ये उनका जो है एक पर्सनल व्यू है कि to communicate socially with the members of target, to develop survival skills and to establish social relationships. Of all these are based on communication within the host community. उन्होंने इन तीन को कहा कि अगर हम तीन पर्पसेस को क्लब टुगेदर कर लें, इस तरह से हम कभी कभी जो है मेन ऑब्जेक्टिव्स और सब ऑब्जेक्टिव्स भी बना लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन विद द होस्ट कम्युनिटी करके हम अगर एक मेन ऑब्जेक्टिव बना लें और उसके अंदर ये सब ऑब्जेक्टिव या सब गोल्स जो हैं वो सेट कर लें, तो इस तरह से भी पॉसिबल होता है. कई दफा हम सिलेबस में इस तरह भी करते हैं. Suggest a goal statement which could cover these 3 learning purposes. The following general communicative goals were developed as part of a curriculum for students learning second or foreign languages at the school level. The goals were not derived directly from the learners, but from analysis carried out by syllabus planners, experienced teachers, and educational authorities. Instruction should enable. अब ये उन्होंने कहा है कि ये ऊपर वाली 3 जो goals हैं, उनके हिसाब से कौन से इसमें से ये जो 9 स्टेटमेंट्स दी हैं वो सेट हो सकती हैं ऊपर. तो जस्ट टेक अनदर फ्यू मिनट्स, तो आप पॉज करें, अपने पार्टनर के साथ इसको डिस्कस करें और फिर वापस आप उसके पॉइंट्स बनाएं और फिर वो आप मुझे ईमेल करेंगी कि अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन इन 9 पॉइंट्स में से कितने पॉइंट्स जो हैं ये ऊपर वाले 3 गोल्स को अगर हमने कैटर करना हो तो वहाँ पे ये वाले आउटकम्स या ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो गोल स्टेटमेंट वो ऊपर सेट हो सकती है. ठीक है, ओके. Okay, so if you have come back now, the following goals were extracted from syllabus for foreign as opposed to second language learners of English. अब आप ये भी देखेंगे कि foreign language के साथ foreign language speaker अगर समझा जाए तो उनके साथ language proficiency की expectation थोड़ी कम होती है. अगर उनको second language learner speaker समझा जाए तो उसके साथ फिर ये कि उनकी proficiency, उनकी competence की expectations जो हैं वो higher हो जाती हैं. तो ये एक foreign जो सिलेबस था फॉरेन लर्नर्स के लिए, उसमें से उन्होंने ये गोल्स उठाए हैं. टू कंट्रीब्यूट टू द इंटेलेक्चुअल, पर्सनल, वोकेशनल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, to develop and maintain a sense of confidence and self-worth. This is very important when you are speaking in a different language because you already know you're not competent enough, you're not proficient enough, so this affects your confidence and self-worth. But how to maintain and develop it through giving you positive experiences. तो इस तरह का syllabus फिर आपका design हो. Then to acquire the competence to use English in real life situations for the development and maintenance of interpersonal relationships, to develop communicative skills in order to acquire, record and use information. Record का अब इसमें writing देखें, writing aspects आ रहे हैं. To develop mastery over the English language as a linguistic system, तो इसमें phonology, morphology, syntax की information, knowledge और किस तरह से वो काम करते हैं उसकी information थोड़ी बहुत आ जाए. Increase through a common language the possibility of understanding, friendship and cooperation with people who speak English. Again ये जो host community में
या नेटिव स्पीकर्स के साथ जो कम्युनिकेशन की बात आ रही, टू बी एबल टू एक्सप्लॉइट वंस नॉलेज ऑफ इंग्लिश टू बेटर इन्फॉर्म वंस वर्ल्ड, इन्फॉर्म द वर्ल्ड ऑफ वंस पीपल एंड देयर कंसर्न्स. सो इंग्लिश की नॉलेज को अपने कंसर्न्स एंड अपने वर्ल्ड व्यूज या अपने जो है ओपिनियंस पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाए. Foster development of critical thinking skills and development of learning skills so that students can continue their education, and to develop the skills and attitude to listen to, read and write English for creative and imaginative purposes. अब जरा इसको देखें और मुझे जरा सोच के बताएं कि ये सारे अगर गोल सेट हों तो आपके जहन में क्या आता है कि पाकिस्तानी कौन से ऐसे लर्नर्स होंगे कि चलें आप कहें कि जी फॉरेन है या सेकंड, आप सेकंड के तौर पे भी सोच लें, लेकिन ये किस लेवल के लिए इतने सारे ये गोल्स हैं, वो मीट करेंगे या नहीं मीट करेंगे, और हमारे आपके हिसाब से करिकुलम में क्या प्रोविजंस होती हैं कि इस तरह के गोल सेट किए जाएं, मीट किए जाएं. अगर आप स्कूल लेवल पे सोचें या आप कॉलेज लेवल पे सोचें तो जरा इसके बारे में सोचें, फिर हम थोड़ी सी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे इन द ग्रुप. ओके, ठीक हो गया. अब हम ये जो यू कैन जस्ट स्किप दीज 3 क्वेश्चंस. तो अब ये उन्होंने एक और गोल स्टेटमेंट्स, द पर्पस ऑफ गिविंग ऑल दीज गोल स्टेटमेंट्स इज दैट यू जस्ट understand and appreciate it based on the different perspectives about what the syllabus should contain, or based on the needs of the learners, you can make the goals and objectives as specific as ये जो भी हमने लास्ट किए, जैसे इसमें इंटेलेक्चुअल, पर्सनल और इसमें कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ वर्थ की बात आई, या फिर आप इसको एज जेनेरिक एज कम्युनिकेट इन द होस्ट कम्युनिटी या सर्वाइवल स्किल्स इन द होस्ट कम्युनिटी. तो यानी आप you have to, as a syllabus designer and a planner, you have to create that kind of a balance कि जी goals किस तरह से set किए जाएं, कितना specific हो, कितना general हो. क्योंकि आपकी for instance जिस तरह इस वक्त आप हैं, you're a class of 22, अब आपकी सारे personal जो है अगर cover करने हो और आपको English teach कर रहे हो हम लोग, तो आप ये देखिए कि कितनी different type की needs होंगी, कितनी different type के personal goals होंगे कि जिनको कैटर करना पड़ेगा. अब अगर हम स्पेसिफिक हो जाएं तो फिर क्या होगा कि जी 22 लर्नर्स हैं तो हमारे को 60 गोल्स बनेंगे. क्यों? क्योंकि हम हर एक के स्पेसिफिक गोल्स पे फोकस करे जा रहे हैं, लेकिन ये हम सिलेबस में नहीं कर सकते. ठीक है, तो यूजुअली गोल्स कितने 6 to 8 आप कर लेते हैं, मैक्सिमम आप 10 कर लेते हैं. तो फिर उसके हिसाब से आप सारे कंटेंट को उसमें सेट करते हैं. यूजुअली दिस इज व्हाट हैपेंस. तो अब कितना उनको जनरल करना है, कितना स्पेसिफिक करना है कि सबकी नीड्स उसमें कवर हो जाए. ठीक है, सो अब अगेन दिस इज another set of goals from another source. Obtain factual and attitudinal information for visual and print media and to use this information for a variety of purposes. अब ये किस लेवल के लिए जरा सोचें appropriate होगा. Interact with others for transactional purposes, यानी कि transactional purposes वही जो functions, कि आपने जाके चीज़ को खरीदनी है, आपने लाइब्रेरी से बुक इशू करवानी है, आपने रास्ता किसी से पूछना है, इंफॉर्मेशन लेनी है. Develop and maintain interpersonal relationship. Provide information to others in written form. क्या क्या लिखना पड़ता है, कितनी फॉर्म्स में आपको राइटिंग की जरूरत पड़ती है. Understand the social and cultural nature of living in the target. अब social and cultural nature कितनी आप जी, for instance if you're sitting in a bus over there or maybe a train, so what kind of social and cultural language would you need? किस तरह का interaction is appropriate or what is expected? क्या वो आप नहीं करेंगे तो it is considered rude. ये सारी information होनी चाहिए. Develop insights into English as a linguistic system. कितनी आपको इसकी information चाहिए. Identify preferred learning styles and develop skills in learning how to learn. Again metacognition की बात आ गई. Continue learning independently once they have left the program. Okay, so कितनी independent learning skills यानी autonomy develop हो गई. तो इस तरह से, so this handout basically gave you understanding of what how you can set needs and goals based on the needs of the teachers, the needs of the syllabus or the content and the needs of the learners. और उसकी बेसिस पे आप उसको स्पेसिफिक करें, उस पे बेसिस पे आप उसको जेनेरिक बनाएं, और कितना करना है, कितनी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, कितनी आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि जिसकी बेसिस पे आप नीड्स एंड गोल्स को अडेप्ट करते हैं. और ये इसमें ये कि बहुत अडेप्टेबिलिटी की गुंजाइश होती है. और एज लैंग्वेज टीचर्स विद इन द क्लासरूम भी आपके पास ये ऑटोनॉमी होती है कि अगर आपको गिवन सेट ऑफ गोल्स या वो आपको ऑब्जेक्टिव्स दिए जाएं तो उसमें भी आप उसको स्पेसिफाई अपने लर्नर्स के हिसाब से उसको
आप कस्टमाइज कर लें या उसको आप सब्जेक्टिव उसमें चेंजेस कर दें, that is entirely possible. But you need to be aware के what are the different needs of my specific learners and what are their personal goals and what is going to benefit them the most. So based on all that, you have to modify or change the syllabus, or sometimes even design a syllabus from zero. So I hope this handout was easy to understand. We can have the discussions, and जो मैंने आप लोगों को चीज़ें कहीं कि आप लोगों ने पॉज करके वो कुछ चीज़ें जॉट डाउन करनी है, वो हम उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन अभी व्हाट्सएप ग्रुप में भी कर लेते हैं, और उसके बाद आप उसको एज एन असाइनमेंट मुझे ईमेल कर देंगे इन पेयर्स और ग्रुप्स एज यू वर्कड अर्लियर. ठीक है? सो टेक केयर एवरीवन, थैंक यू, एंड इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.